Yes. Right. So the concept of this cryptocurrency you can better understand from my articles. That article is there on Medium also, and from LinkedIn Okay. you can explore articles. So you can go through that also. Okay. And along with the regulatory aspects, one more important aspect is there, like people are using cryptos as an investment. They treat it as a, say, uh, value in their cryptos will rise in future. They use it as a tool against inflation. Yes. So they want, means they are investing. This is the investment tool for them. So आज बिटकॉइन $45,000 का है. Yes, sir. सपोज आपके पास बिटकॉइन है और आप बाजार में जाते हो और 5,000 रुपए की शॉपिंग करते हो, क्या आप 5,000 रुपए की पेमेंट बिटकॉइन में करना चाहोगे? व्हेन यू हैव फीलिंग लाइक आफ्टर अ वीक और से 1 मंथ वैल्यू ऑफ बिटकॉइन विल राइज बाय 20% और 40%, तो आप अपने बिटकॉइन में से 5,000 या 10,000 रुपए का पेमेंट करना चाहोगे? कभी नहीं करना चाहोगे. आप रखोगे उसको संभाल के कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो करेंसी में तो ऐसा नहीं है. अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी. Yes, sir. Yes, sir. Good. तो आज भी 10,000 रुपए हैं, 10 दिन बाद भी 10,000 होंगे. Yes, sir. So this is also like a very important practical reason of not using crypto as a cryptocurrency. Cryptocurrency, yes. Yes. The most important reason is, yeah, please carry on. Sir, but there are places in the world, or there are shops that are accepting payments as Bitcoin. So, very sir, few, that very means few. Very few, yes, sir, very few. Very but, few. Just to actually what happens sir, practically. You believe that, yes, sir. I just have a question, sir. You believe that it can never completely replace conventional currency, is it? Never, 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 never. Again, I say, I had written one line when I was writing this article, whether crypto, we can say is cryptocurrency or not. So I had written one line, like along with the fiat currencies, this crypto assets will go in parallel directions, like side by side. Okay. एक साथ साथ चलेंगे. Okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे रिवर है गंगा. जब गंगा निकलती है, जहाँ से गौमुख से गंगा निकलती है, उसके बाद उसके अंदर कई सारी रिवर्स मिक्स होती हैं. Yes, yes. मंदाकिनी और 3-4 रिवर्स और उसके साथ मिक्स होती हैं उत्तराखंड में ही, जहाँ से निकलती है. आगे आते आते लास्ट में ये गंगा बन के सी में मिक्स हो जाती है. सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि फिएट करेंसीज के साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स, so these will go simultaneously. So yes, now the scenario again will change, like after this Russia and Ukraine war, the importance of cryptocurrencies will rise. There will be more adoption of cryptocurrencies in their decentralized formats. Why? Are you aware with the concept of SWIFT? Concept of SWIFT. Whenever we make international payments, so transfer of international funds are done through the mechanism of SWIFT, SWIFT, in the banking channel. It's a very famous term in the banking channel. Whenever you go to bank and you want to send, say, $1,000 or $10,000 to Canada, USA, or some other country, or you want to receive money from there, so in banking channel, technology of SWIFT is used
for transferring funds from one bank, one Indian bank to another bank, say in Canada. If you want to send, Sir, say, is that remittance? remittance kind of thing, you can say. Yes. But Yes, sir. I'm getting it. yes, but SWIFT is centralized in the control of centralized authorities. Centralized authorities means there is an organization that called SWIFT based in Belgium. So after Russia attacked over Ukraine, so what they have done, they have cut Russia from the SWIFT. Now Russia cannot use SWIFT. So Okay. Russia is what they are doing. They are doing in the traditional way, like say they want to trade with India. So now ruble Indian rupees trade is going on, and they want to trade with China. Ruble and Chinese yuan is that kind of trade is going on. In Yes, sir. finance sector, there was international currency US dollar. US dollar, yes. So now they are not using US dollar. Russians can't use that international currency because they are not connected with the SWIFT now. The reason Okay. of war. So maybe in, like after the war, like people may start using thinking about the decentralized formats of blockchain and Yes, cryptocurrencies. yes. Got it, sir. Got it. So it shows the importance of decentralized formats. Yes, sir. But in India, I had seen one question you had mentioned. What is the scope of cryptocurrencies in the Indian context, regulation point of view? Yes, sir. Uh, See, Indian government they are going to design their policy in two parts, two segments. One will be for blockchain and one will be for cryptocurrencies. They are using these Cryptocurrency. two things separately. Okay. Blockchain, they are treating it as a technology. Sir, sorry to interrupt, sir, but some states in India, they have implemented blockchain in their governance also. I have read, like in Yes, Andhra Pradesh and in Maharashtra, they have implemented blockchain as a technology in their governance also. yes, you're right. On pilot basis, they have used. They're using in Yes, sir. at one place. I think Andhra government is using for voting mechanism, and Maharashtra government is using for they're used for their COVID mechanism, and I think Andhra is also using for their keeping records, property Yes, records. sir. Keeping records. Yes, sir. Yes, sir. Property records. Yes, sir. I've read Yeah. this. But still, it's going on pilot basis. It's not full fledged Okay. Yes, sir. because a lot of if and buts are there. So right now, like they have to train their staff. They need to have infrastructure to handle this kind of technology. So it will take some time, but still, like it's good. They have started using it. And uh, while designing the policy uh, in for cryptocurrencies, the government is going to focus on cryptocurrencies which is centralized format, not on the Yes. decentralized format. When we talk about centralized format of cryptocurrencies, then importance of crypto exchanges in India, it comes in the picture. Yes, sir. Have you ever heard the name of crypto exchange? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I do have invested like a very little amount in some using in Bazirex, SplitPay, and sir, I have read the interviews of people like Mr. Sumit Gupta, then somebody from CoinDCX, Yeah, CoinZibaPay, yeah. the interviews that they have given in the newspapers after the budget has been passed. Sir, I've read a few of them. Mhm. So these are the centralized formats. So there is a proper mechanism. How do they work? But the government is going to recognize the format of the cryptocurrencies that is being channelized through these exchanges, crypto exchanges, and these exchanges will be registered with the government of India, maybe through SEBI or maybe through the Bank of India or whatsoever the government plans in Okay. their policy.
But for the time being, the government has given one temporary window in budget 2022. So they have let down some tax, 30% income tax, Yes, 1% yes, TDS, 30%. Yes, sir. and section 115, I think 115BX, something Gifting, like. sir, gifting. Yes, sir, 115 BH. Sir, even the gifting of cryptocurrency will be Yeah, taxable give if any you. kind of transfer of cryptocurrency from one wallet to another wallet, that will be taxable. Yes, sir. And whenever we talk about cryptocurrency, you need to be like very clear about the concept of wallets. Yes, sir. जैसे आप अपने वॉलेट्स में अपने पर्स में पैसा रखते हो ना, कैश रखते हो इन रुपीस में, सो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए लाइक वी नीड टू हैव वॉलेट्स. Yes, sir. दीज वॉलेट्स आल्सो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट्स में होते हैं. जो क्रिप्टो एक्सचेंज पे हम Okay. करेंसी रखते हैं, सो दोज आर द सेंट्रलाइज काइंड ऑफ वॉलेट्स. Okay. And decentralized wallets, a very famous example is MetaMask. MetaMask आपने सुना है कभी? No, sir. आप ब्राउजर पे कंप्यूटर पे अपना ब्राउजर यूज करते हो, उसमें क्रोम यूज करते हो ना, तो Yes, क्रोम sir. पे सर्च करना, क्रोम के अंदर मेटामास्क मिलेगा. Okay. Okay, sir. क्रोम ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट है मेटामास्क. तो Okay. Okay. उसको यूज करने के लिए आपको अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करना पड़ता है, और वो ईमेल आईडी से क्रिएट हो जाता है. आपका यूजर आईडी Okay. पासवर्ड बन जाता है. तो लाइक उस on that wallet only you will be the only person who will have control on that. Okay. और जो आपने वजीर एक्स में इन्वेस्ट किया है पैसा, जो भी आपने खरीदा है क्रिप्टो एसेट, उसमें वो जहां पे रखा हुआ है, वो वजीर एक्स का एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे उस वजीर एक्स के द्वारा बनाया हुआ वॉलेट है, उसको हम सेंट्रलाइज वॉलेट बोलते हैं. वो वॉलेट Yes. आपने नहीं बनाया, आपने तो वजीर एक्स ने आपका अकाउंट क्रिएट किया वहां पे. आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है, राइट. आपके केवाईसी हुए वहां पे, आपने अपना आईडी Yes, प्रूफ sir. दिया. तो सेंट्रलाइज इज दैट द मेन रीजन. गवर्नमेंट सेंट्रलाइज को फोकस क्यों करती है? वहां पे हम लोग अपने आईडी प्रूफ के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं. इफ एनीवन इज Okay, sir. caught while doing anything wrong in cryptos, so centralized platform पे government can catch us. Yes, sir. But at decentralized formats, nobody can catch us. अब आपने मान लो फॉर एग्जांपल आप लाइक यू हैव अकाउंट ऑन मेटामास्क दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है. कल को आप कुछ गलत करते हो, अपनी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्री में भेज देते हो, सो विच मे बी लाइक अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंडिया. So who is going to know about that? Nobody. So गवर्नमेंट को तो नहीं पता चलेगा कि आपने फंड बाहर भेज दिया. Yes. So that's the reason. But still, like some exceptional windows will be there in the government policy for the decentralized format of technologies for the people who are involved into development of blockchain technology and cryptocurrencies and different kind of projects. So that over there, government will give some relaxations for using the decentralized formats of blockchain as well as cryptocurrencies. And being a student of finance sector, so the basic idea is along with your studies, so you people can study about the fundamentals, basics of blockchain, cryptocurrencies, and what kind of technologies are being used for the centralized and decentralized platforms of blockchain, and how these cryptocurrencies can be connected with the thing traditional finance world. So I'm also giving consultancy to one of my client. So what they are going to do is they are going to set up their own NBFC. Do you know the concept of NBFC, non-banking finance companies? No, sir. Non-banking NBFC.
NBFC, नॉन बैंकिंग FC, फाइनेंस yes. कंपनी, कभी सुना है एनबीएफसी के बारे में? सर सुना है फाइनेंस पर इतना. फाइनेंस कंपनीज के बारे में सुना है? Yes sir, they provide financial बैंक services. बैंक बैंक क्या होता है? बैंक एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। Yes sir. तो ऐसे ही रिजर्व बैंक कुछ कंपनीज को लाइसेंस देती है, वो बैंक तो नहीं होते हैं बट दे कैन डू देयर फाइनेंस एक्टिविटीज। Yes sir. पेटीएम यूज करते हो ना? Yes sir. पेटीएम एक एनबीएफसी है। Okay. पेटीएम के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट फाइनेंस एक्टिविटीज वो करते हैं। फिनटेक वाला कंसेप्ट सुना है? फिनटेक कंपनीज। Yes sir. Yes sir. तो पेटीएम क्या करती है? पेटीएम फिनटेक का यूज करती है और फाइनेंस एक्टिविटीज करती है, बट विद द परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। India, yes. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो परमिशन दिया हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को थ्रू द लाइसेंसिंग सिस्टम। So what I am doing is one of my clients, they are going to set up NBFC, and in future they want me to design an architecture which can connect their traditional finance system with the crypto finance system. Okay. तो उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन सामने आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या कहते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या करना है। लाइसेंसिंग इंडिया से रहेगी, बाहर से रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी उसमें, ब्लॉकचेन की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी उसमें। सो बेसिकली आप लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज तो पढ़ा नहीं रहा है आप लोगों को, बट जब आप पास आउट होके निकलोगे आफ्टर 2 years, अगर वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिट करना है आप लोगों को, लाइक अभी दुबई के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से आप समझो एक रिवोल्यूशन आया हुआ है इसका, क्रिप्टोस का। Dubai is going to set up their smart cities with the help of blockchain technologies. Yes sir. Singapore is doing well. Or America is also going to do like huge in their regulatory aspects. They are like, we are far behind USA in Yes. these things. European Union is also going to design their policies. Russian government is also working on it. So Indian government is also working on it, but in news you must be reading like Reserve Bank is saying there should be blanket ban on the cryptocurrencies in India. कभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी है आप लोगों ने, या नेट पे कभी पढ़ी है कि रिजर्व बैंक बोल रहा है हमारा इंडिया का कि गवर्नमेंट को क्रिप्टोकरेंसीज को बैन कर देना चाहिए? Yes sir. Yes sir, sir I've read that. क्यों बोलते हैं वो? कभी फाइनेंस के स्टूडेंट हो आप लोग, कभी इस तरफ सोचा कि वो ऐसा क्यों बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए? हमारा जितना इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बैंक्स हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसीज के यूज करने के अगेंस्ट हैं अभी एट प्रेजेंट। क्यों है बताओ? Sir, I had read one article in which the RBI governor had commented that cryptocurrency can disturb the financial stability and India's it's against the India's economic interests. ये But तो घिसी they पिटी लाइन है। haven't. तो Yes, sir. They have. I couldn't get to the root of it about why they were saying so, but they just kept saying about how volatile it is and how risky it is. See, you had used two words, centralized and decentralized, right? When we talk about decentralized finance, we call it as a DeFi, DEFI. This is the famous term, short form of decentralized finance. So
through cryptocurrency, if people start using this decentralized format of cryptocurrencies in finance sector, then there are chances of losing the finance business by the banks. Already, like all these banks, they have spent huge money to establish their infrastructure. एक बैंक की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें ना, $250 बिलियन के आसपास बैठती है जाके. इतना पैसा लगा रखा है इन लोगों ने. तो decentralized finance, this itself is a disruptive, you can say, for the traditional finance sector. और इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल फाइनेंस सेक्टर क्या है? ऑल दिस बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, private banks, government banks. So they are not ready for using cryptocurrencies in their this thing. So their focus is on using the traditional finance. So there are chances of losing finance business. Like in traditional finance, different types of products, say fixed deposits are there, bonds are there, banks provide interest to the depositors. Same thing is happening in cryptocurrencies, in decentralized format structures. Like people are like lenders are there, borrowers are there. People are borrowing money from there, lending money over there, and interest rates are very high over there. So these are the reasons. Like they are a little bit afraid of this thing. That is also true. This industry is very volatile, but volatility of this cryptocurrency will get reduced over a period of time when more number of public participation will be there. जितनी ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होती जाएगी इसके अंदर, तो वॉलेटाइल स्ट्रक्चर जो है इसका, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा. Okay. So Yes, sir. let's again come to your questions. आपके सामने लिस्ट है क्वेश्चंस की? Yes, sir. Should I open your questions? Yes, sir. Are you able to see the question list? Yes, sir. I am able to see it. So your first question, what is your name? So that I think you can fill in there. Yes, sir. Right. Yes, sir. I'll do that. What is your qualification? What do you currently work as? Qualification, you can write on there, like a commerce graduate, BCom honors, and post like said with the graduation ICW. So nowadays it is called as ICMAI, Institute of Chartered Management Accountant. Okay. And CA Inter, and having diploma in international business. So these are, and for proper wording, you can go through my profile at LinkedIn. So I've Yes, sir. Yes, sir. mentioned I'll over. do that. I'll do that. I'll do that. And I'm working as a blockchain consultant right now, blockchain and crypto consultant.
So I'm into digital marketing also. So along with the projects, along with the consultancy, I am into the development of these projects also. Myself is not a developer. I'm not into the coding parts, so I'm not the software developer. But I do handle the team of developers. And my specialization is a supply chain management and finance sector. And nowadays I'm focusing on gaming sector. Okay. And your next question, every market depends on some factor. Likewise, what according to you, the biggest factor on which crypto depends? Crypto depends on, say, the biggest factor is, I will say, like public participation. पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा है तो वो करेंसी ज्यादा चलने वाली है. ओके. मार्केट में काफी सारी करेंसीज हैं. लाइक आपने मीम कॉइन्स के बारे में सुना है? सॉरी सर. मीम कॉइन्स, MAME कॉइन्स. शिबा इनू के बारे में डॉज कॉइन सुना है? यस सर, शिबा इनू, डॉज कॉइन. यस सर. शिबा इनू मीम कॉइन है, डॉज कॉइन भी मीम कॉइन है. अभी तक इन करेंसीज का अपना कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं है, बट इन करेंसीज का एडॉप्शन जो है पब्लिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है. इट्स ऑन इंक्रीजिंग साइड. More public participation means that makes any cryptocurrency more popular. Yes sir. शिबा इनू की अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है. दे आर सेइंग कि दे आर डेवलपिंग देयर शिबा इनू ब्लॉकचेन. शिबा इनू एथेरियम के प्लेटफॉर्म पे काम करता है. डॉज कॉइन की अपना प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू बिटकॉइन, लेकिन उसका कोई अभी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बस स्टिल सम पीपल आर वर्किंग ऑन इट. तो उसकी अपनी ब्लॉकचेन है. डॉज कॉइन में और शिबा इनू में ये मेन डिफरेंस है बेसिक. दोनों के में से शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन तैयार हो रही है, बोल रहे हैं, और डॉज कॉइन की ऑलरेडी है. So your fourth question, the answer lies over there is like the biggest factor is the public participation. इंडिया के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी उसके रेगुलेशंस लेके आ रही है. वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है तो वहां की गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आ रही है. What is your opinion about the tax law passed by the Indian government on cryptocurrency? So law they have passed income tax 30%, that would be applicable from 1st April 2022. Yes sir. Right. And TDS of 1% that would be applicable from 1st July 2022, after June. Yes sir. But certain changes will be there in the TDS sector, and maybe like the way they are handling their deduction and all in the Income Tax Act for the cryptocurrencies. So I hope some changes will be there. So I'm not going into the details of what we can deduct and what we cannot deduct from the income of the crypto, and certain provisions related to the set of kind of things, set of crypto losses or and all. Okay sir. But it's good, like government has given one window to the cryptocurrency to come into this streamline. So it's a temporary arrangement, I would say, government has given. So with the proper full-fledged policy they are coming with, it will take some time. Taxation doesn't signify legitimacy. Any comment on this? That's right. Right now, today we can say the kind of taxation government has used, this doesn't signify legitimacy. So, but in future, yes, the government comes out with the complete policy on this part. So then they will recognize this technology, blockchain technology, as well as cryptocurrencies, crypto assets, virtual digital assets.
So they will be defining the terms properly in different acts also. Like somebody wants to go for the trademark registration of any crypto trademark. So government is coming out with those policies. What is the reaction of public on the taxation policy? So public public is happy, and there are some people they are not happy. Like there are a lot of young guys like you, like still like they're in the studies or say already they have passed out or something like that within the age group of 25. So they are not happy with the 30% taxation. They are Yes, saying sir. कि Yes, sir. हम कमाएं और 30% हम गवर्नमेंट को दे दें भाई, क्यों दे दें? Sir, there was one more speculation that I read about. It was that people were saying that 30% is too much. And this is like the kind of taxation that people pay on gambling, betting, lottery. And they said that we're not gamblers and that for which government is imposing such a high tax rate on us. सी जब 1995 वाला टाइम पीरियड चलता था ना, तो इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी उस समय, ठीक है। तो तब भी जो शेयर मार्केट में टैक्स लगते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन, तब गवर्नमेंट इन चीज़ों को ऐसे ही देखती थी। तो लोग ऐसे ही हो हल्ला मचाते भी थे कि ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया। बट गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ को देखने के लिए कि जब किसी चीज़ को एक नोटोरियस काइंड ऑफ किसी चीज़ को जब वो लेके आते हैं ना स्ट्रीमलाइन के अंदर, वो यही तरीका यूज करते हैं। या तो वो पूरा बैन लगा देती, बट टू कीप इट ऑन द टेस्टिंग साइड दे मस्ट हैव थॉट कि चलो पहले अभी शुरुआती तौर पे टैक्स लगा देते हैं, 30% टैक्स लगा दो, तो लोग देखते हैं कितना चिल्लाते हैं, तो अभी पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो मे बी आफ्टर 6 months गवर्नमेंट कम आउट विद द अनाउंसमेंट कि नहीं जी 30% नहीं 25% कर देते हैं या 20% कर देते हैं, या हो सकता है अगले बजट में 30 को रिड्यूस करके 20 कर दिया जाए। बट एटलीस्ट द इम्पोर्टेंट इज कि क्रिप्टो कम्युनिटी को एक स्ट्रीम लाइन में लेके आई है, रिकॉग्निशन मिला। यस। तो ठीक है, अब यंग कम्युनिटी है तो बोलते तो है कि हम अर्न करते हैं तो आप 30% ले जाओगे, और अभी तो लोगों को शायद इसमें ठीक से ये नहीं पता है। एक छोटा सा पार्ट में इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टैक्सेशन में आप अपने उसमें लिख सकते हो प्रोजेक्ट में। अगर आप 2 क्रिप्टोस में डील कर रहे हो, क्रिप्टो ए क्रिप्टो बी, क्रिप्टो ए में आपको लॉस हो गया सपोज 1 लाख का, क्रिप्टो बी में आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो यू विल से माय नेट प्रॉफिट, तो मेरा तो नेट लॉस है 50,000, क्योंकि 1 लाख का लॉस उधर है, इधर 50,000 का प्रॉफिट है, तो नेट लॉस तो मेरा 50,000 है, तो मेरा तो टैक्स नहीं देना बनता। बट द करंट रूल दैट सेज कि आपको भाई 50,000 के ऊपर 30% 15,000 रुपए का टैक्स देना है। 1 लाख का लॉस वो आपका है, आप अपने पास रखो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द रूल। इस समय जो मार्केट में जो पब्लिक जो एक्सपर्ट्स हैं, तो दिस इज वेरी मींस हाईली कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ रूल कि जो क्रिप्टो लॉस है, they are not recognizing the crypto losses against crypto gains. So at the time of budget, public was thinking like crypto losses can be set off against the crypto gains. Yes sir, yes sir, this point in the budget I've read. Yes, but a few days back some minister was answering some questions in the parliament, so he said no, crypto losses cannot be set off against any kind of profit, either it is crypto or non crypto। तो जब क्रिप्टो गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते तो नॉन क्रिप्टो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बट इसमें चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज हैं आफ्टर सम टाइम। आई थिंक पब्लिक विल गो टू द कोर्ट, they will ask for the clarifications from the court, so a lot of changes will be there।
तो रिएक्शन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल द क्रिप्टो मार्केट affect other markets after the law passed over crypto? So other markets is a very elaborative term. We can redesign this question, how the blockchain and crypto market will affect other markets after the law passed over cryptos and blockchain. Because once policy is there, so participation will increase. Participation means number of players will be more. Big players will enter into this. Big players means big banks, big financial institutions, corporate houses, they will enter into this. Right now, they are not doing anything on this part. So like this Vajirex, CoinDCX, I won't say they are the crypto houses. They are the corporate houses. They are not the corporate houses. आप उनके उसमें जाओ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपनी फॉर्म की है लोगों ने बनाया जिसमें लाइक वजीरस की कंपनी में जाओ उसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए का है, CoinDCX में जाओ उसका भी आपको ऐसे 1 लाख रुपए का मिलेगा। अभी तक मैंने मैक्सिमम पेड अप कैपिटल किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का देखा है इंडिया में तो 15 लाख का देखा है। तो ये क्रिप्टो एक ऐसी कंपनी जो है ये कॉर्पोरेट हाउस नहीं होते हैं, तो बस टेल दे आर रनिंग देयर शो। So along with this proper full-fledged policy by the government, so participation will increase from the big financial houses, corporate houses, Reliance, Tata, Birlas, kind of people in India. I'm talking about in India. Even not only in India, yes, even in foreign countries also, like big financial houses, they are coming into it. JP Morgan already is into it, and there is a very famous case. They are Yeah. And so they are launching their own cryptocurrency. Yeah. They are working on it already, and I think they have launched some blockchain also, which is running on pilot basis for their financial transactions. And to understand more these things, international payment mechanism. So in crypto side and non-crypto side, there is a very famous case going on. If you have heard about Ripple versus SEC. SEC is the Security Exchange Commission in USA. Hello? Hello. Yeah, can sir, you hear me? I couldn't hear you, sir. No, sir. Your voice is gone cut. Can you please repeat, sir? One moment. Hello? Yes, sir. Yes, sir. I can. Okay. So the screen is being shared. Are you able to see the questions? इतना नेट में प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी देखो मेरे वाले से कनेक्ट हो। मेरे अच्छा उससे? Hello. Yeah. Yes, sir. I can hear you, sir. Okay. So 1 minute. Yeah, I was talking about a very famous case going on in USA, Ripple versus the SEC. SEC is the government authority in USA, and this is a very famous case. And this is my perception. Like every finance student, they must go through the details of this case. It's a very famous case. It's going on. Who will win? Whether the government authority will win or the Ripple will win. Okay, sir. I'll go through it, sir. And the reaction on the crypto market.
Customer, what according to you is going to be the trading volume of crypto end of year? So you can get it from the like tentative volumes from the Google itself. And but yes, it will decline right now because of the TDS provision of 1%. Because that So, 1% sir, the trading volume of crypto will decline. Yeah, the reason being, if government doesn't come up with the amendment in TDS provision, then it will decline. Because 1% TDS means right now the government is saying on every transaction we have to pay 1%. Means the traders have to pay Yes, 1%. sir. So 1% means Okay, yes. every transaction of say 1%. Every transaction means say at the exchange. For example, I buy or sell Bitcoin. Bitcoin is the value of say 45 lakhs. 1% means 45,000. Yes, sir. Where That I is will the amount. so from where I will earn, and 45 lakh if I pay 45,000 tax as TDS, and on every transaction, so on every transaction day trade is not going to make 45,000. उसका तो पूरे दिन में 5,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट Yes, होगा, sir. तो 45,000 रुपया कहाँ से देगा वो टैक्स 1% ट्रांजेक्शन पे. Yes, yes. Yes, sir. Understood. तो क्रिप्टो एक्सचेंज कोई भी जब चलती है तो उसमें डे ट्रेडर्स होते हैं जो उस एक्सचेंज को रन करते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं रन करते हैं उसको. इन्वेस्टर्स तो आज आया, आपने वन टाइम लाइक इन्वेस्टमेंट की, आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके घर पे बैठ गए, आप डेली ट्रेडिंग करते हो? नहीं करते ना. No, sir. तो डेली ट्रेडिंग होती है ना एक्सचेंज पे, कौन करता है उसको? डे ट्रेडर्स. Yes, sir. और 1% टीडीएस Daily. तो नहीं पे करेंगे डेली वो. Yes, sir. Yes, वो sir. बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं. Yes, sir. तो 1% अगर पे करेंगे तो लाइक कहाँ जाएंगे वो? गवर्नमेंट को इस Yes. अमेंडमेंट पे आना पड़ेगा. Okay, sir. Got it. 30% टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है लोगों को ज्यादा, मेन है 1% टीडीएस. Okay, sir. Do you feel that any points are missing things still not clear in the law over crypto? A lot of things which are not clear in the law right now. Sorry, sir. There are a lot of things which are not clear in the law, like government is Sir, silent. I have one question regarding this. Sir, it's about on which end is the TDS or going to be deducted? Is it, sir? TDS like suppose I am paying to someone, so I will have to deduct TDS 1% from that. Okay. TDS So, sir, means, the payer will have to pay the TDS. yes, yes. TDS, the meaning of TDS is the same. This thing, like on behalf of someone, you Tax are paying. It is deduction. your obligation. Okay. Yes, sir. For example, like मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, वो कंपनी मुझे पेमेंट देती है, तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके वो मुझे पेमेंट देगी, और वो टीडीएस उसकी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाने की. Okay. Yes, sir. Got The it. definition of TDS is the kind of tax which is deposited by the deductor. जो पेयर है वो डिडक्ट Okay. करेगा और डिपॉजिट कराएगा. डिपॉजिट भी विदिन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. Okay. डिडक्ट करने के इतने दिनों के अंदर उसको डिपॉजिट करवाना है. नहीं करवाता है तो देन ही विल बी एट द फॉल्ट. उसका डिफॉल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. और टीडीएस के जो डिफॉल्ट होते हैं उसके प्रोविजंस बहुत टाइट होते हैं. Okay. Got it, sir. तो जो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्रिप्टो एक्सचेंज की. फॉर एग्जांपल आप और मैं ट्रेड करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज, वजीर एक्स की क्रिप्टो एक्सचेंज पे, ठीक है. तो वो टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज
जो है नेट उसमें से काट के उसके अपने सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म होगा जो ऑटोमेटिकली वो टीडीएस काटेगी और उस टीडीएस को जमा करवाने की जिम्मेवारी भी उसी की होगी, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम करती हैं चीजें। Yes, sir. बट ये प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट इसको सक्सेसफुली, अदरवाइज ये ट्रेड खत्म कर देगी। Okay. Got it, नेक्स्ट sir. Got it. next question is, according to you, why did we not see a spike in the crypto market after the law was passed? नहीं, स्पाइक तो है, ऐसी बात नहीं है, ट्रेडिंग तो हो रही है मार्केट में, बट sometimes volumes are low, so reasons are there like so many reasons are there। अभी इंटरनेशनल रीजन है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वॉल्यूम्स इसके काउंट होते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल, जो आपने नाम लिया लाइक यू सेड वजीर है, कॉइन डीसी है, ये सभी एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स हैं कनेक्टेड हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ। फॉर एग्जांपल Yes, sir. Globally. इंटरनेशनल बिगेस्ट एक्सचेंज इज बाइनेंस, तो कॉइन डीसीएस भी बाइनेंस के एक्सचेंज को यूज करता है, वजीर एक्स तो है ही बाइनेंस वाले का। Yes, sir. और जो वॉर हो रही Sir, है is it because the global, yes, sir. So the global market has fallen and globally there is a dip, and that is why even crypto market has been affected. crypto market has been affected, but it's a very wide thing. We have to calculate to what extent it has been affected. Like a few days back, some in USA, they had their finance ministry had reduced. No, it's not reduced. They have increased rate of interest by 0.25 points. So long time, I mean, after long time, they had increased this interest rate, and because of which, like finance market was disturbed. Disturbed in the sense like people started investing in financial instruments in USA. So there is a concept of say different types of tools are there to meet with hedging, inflation. So inflationary tool is one of the famous tools. This increase or decrease in the rate of interest by the central finance authorities of the country. I Okay, think sir. you people must have read about these things. Like why means when what happens when government increases the rates of interest, what happens when they decrease the rate of interest, like Yes, CRR sir. ratio, CRR or the different types of ratios are there, cash reserve ratios or the things. Yes, So sir. that Yes, was sir. also the reason to disturb this crypto market. And crypto market is well connected with the mining activities also. So if you heard about the mining of Bitcoin Yes, mining sir. and all, so this Russia and Ukraine war is going on. So in Ukraine, so because of the war, I don't think any mining activity is going on. And for mining, heavy electricity is required. No electricity is there. In China, there Okay. was like ban on mining activities long time back. So in Kazakhstan also there was some disturbances for a month. So that also disturbed these crypto activities. Okay, sir. And next is, can we see new further reforms by the government for crypto trading or investment? Yes, in future we will have. Once the government comes out with the policy, so government will decide like how these trading activities should be controlled, whether it should be regulatory body should be SEBI or RBI.
So Okay, sir. accordingly, they will come out with the policies also. Can we say that there's certainly a future of crypto after being accepted by the government? Yes, definitely a future will be there. And uh, of, like for using the blockchain, a role of crypto will be like huge. Big crypto will play a big role in blockchain technology. A lot of corporate they would like to use crypto as a say fuel for their blockchain activities. Okay, sir. Got it. Majority of the corporates right now they are interested in implementing crypto solutions in the blockchain. उन्हें क्या लगता है कि क्रिप्टो को यूज करने से वो रातों रात अमीर हो जाएंगे. आप मेरा आर्टिकल पढ़ना, एक लिखा मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोस. Yes, sir. Sir, I will go through your articles and तो YouTube videos today. उसमें मैंने मेंशन किया है कि ओवरनाइट जो क्रिप्टो के बारे में कहा जाता है कि वे रात को सोएंगे, सुबह हम अरबपति बन जाएंगे उठेंगे तो क्रिप्टो से. सो वो लोग ब्लॉकचेन यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई क्रिप्टो भी यूज करो इसके अंदर, क्रिप्टो कॉइन लेके आओ और खूब पैसा बनता है उसमें. जबकि ऐसा नहीं है. मेरे अपने क्लाइंट्स भी ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें क्रिप्टो कॉइन कैसे यूज करें बताओ. तो इट मीन्स कि वो रातों रात हजारों करोड़ों रुपया लाइक प्रिंट करना चाहते हैं, जबकि प्रैक्टिकली इट्स नॉट लाइक दैट. But role of crypto will play a very big role in the implementation of blockchain technology also. Okay. And Yes, next question is what you're about investing in cryptocurrency. Be careful. So my suggestion for the thing when you want to invest, like first you go through properly, thoroughly about the cryptos and all, how the volatile factor of this crypto industry affect you, and how much money you have to lose. अगर आप 1 लाख रुपया खो देते हो और आपका लाइक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट्स नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, तो आप लगाओ. अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए ये पैसा बचा के रखा था, तो फिर मत लगाना. बहुत सारे लोग होते हैं लाइक पेरेंट्स दे सेव मनी for to meet with the educational expenses of their children, marriage expenses of their children, for the settlement of their children, and if they invest that money into cryptocurrencies, so that I would say is wrong. That should not be invested, because there are chances like you may lose in the sense all of a sudden happen something and value of cryptos come down. What you will do? Either you should be in a position to hold for a long time, maybe for 1 year, for 6 months, for 2 years. But if you need that money after 6 months, आपने 10 लाख लगा दिया, 6 महीने बाद आपको 10 लाख चाहिए भी, तो वो तो आपका 10 लाख बन गया 50,000. अब आप क्या करोगे? तो ऐसे केसेस में it's my suggestion not to invest. Invest up to that extent only which you can bear to lose. Afford to lose, yes sir. Understood. So how should a person manage his portfolio if he is investing in crypto? It's a very typical question. Like crypto में portfolio manage करना है तो आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा क्रिप्टो को ठीक से. अगर आप स्टडी नहीं करते हो और आप कहते हो मेरे पास तो 1 CR का अमाउंट है, मुझे तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, तो देन गो एंड फाइंड आउट सम गुड कंसल्टेंट जो आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करे. वो आपके पोर्टफोलियो को कमीशन बेसिस पे हैंडल करेगा, तो उसी हिसाब से वो आपके पोर्टफोलियो बनाएगा, तैयार करेगा कि कितना पैसा कौन सी क्रिप्टो में लगाना है.
तो Okay. आपको बताएगा कितने So, टाइम पीरियड के लिए लेना है। yes, sir, I got your point. Sir, I have a question. Uh, Sir, what about the coins? Like, should we diversify our investment and put it in different coins, or should we focus on the coins that are in the limelight? Like, Bitcoin is obviously there, but Ethereum, Ripple, Shiba, Dogecoin. So, should we focus on those coins, or can we diversify our portfolio by investing in different types of coins? See, different criteria the person should use. First 20 top level coins, I would say. Pick those coins, study about them. Bitcoin, Ethereum, Ripple's XRP, Dogecoin, Shiba Inu, Matic, Polygon, and Solana, Cardano. So many are there. But the Okay, sir. important thing is either you should be in a position to study all these, or you should have an advisor or consultant who can study on your behalf and who can advise you properly, and you should have faith on that person. वो आपसे Okay. एग्रीमेंट कर सकता है कि मैं आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करूंगा और ऐसे ऐसे इसमें पैसा लगवाऊंगा, इतने टाइम पीरियड में चांसेस हैं कि भाई पैसा आपका इतना ग्रोथ हो सकती है। तो लाइक मे बी 10%, 20%, 15%, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके साथ, तो या तो उसके थ्रू करना चाहिए, अगर आप खुद करना है तो अच्छे से स्टडी करके करना चाहिए। Okay. ये दिस इज द मेन थ्योरी बिहाइंड इट। इसमें डेरिवेटिव्स भी होते हैं, अगर आपने कभी डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है, लाइक फ्यूचर्स, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? डेरिवेटिव्स Sir, I've heard ट्रेडिंग, about futures. मार्जिन ट्रेडिंग एंड ऑल, Yes, sir. कि उसमें आप लाइक यू पे 1 रुपीज एंड यू कैन ट्रेड फॉर 10 रुपीज और 20 रुपीज और 100 टाइम्स मोर, तो Okay, sir. वो भी होती है इसमें। तो इसकी क्रिप्टो स्पॉट मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल एंड दिस डेरिवेटिव मार्केट इज टू वॉलेटाइल in comparison to spot market. Okay, got it, sir. How will the risk management of cryptocurrency be different from any other markets? The person We should should have very be strong, investing only the amount that we can. नहीं बहुत बहुत अच्छी कंडीशन वाला पर्सन के, जो भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट करे तो उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा एक वो मजबूत दिल होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए उसको बस। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Because of the volatility, sir. यस, तो उसको समझ आनी चाहिए वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है। अभी देखो मार्केट में करेंसी है शिबा इनू, राइट? ये कई Yes, दिनों से sir. एक पॉइंट पे आके टिकी हुई है। Yes, sir. एक्सआरपी है Yes, वो, sir. एक्सआरपी है वो भी एक पॉइंट पे आके टिका हुआ है। तो अब ये जबकि शिबा इनू बहुत ज्यादा वॉलेटाइल करेंसी है, बस स्टिल कई दिनों से Yes. टिकी हुई है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है। Hmm. तो ये एक Yes, sir. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि रीजंस बिहाइंड दी वॉलेटाइल थिंग्स। बिटकॉइन बहुत ज्यादा, अभी तो इतना वॉलेटाइल नहीं रहा, पहले तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता था। ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं, Yes. लाइक लॉट ऑफ करेंसीज आर देयर say which are highly volatile in nature. Some of the currencies which are means volatile but not to that extent. एक जिसको हम बोलते हैं कि एक तमीज के दायरे में, समझते हो तमीज का दायरा, मतलब एक रिस्पेक्टेबल वे में, लाइक उछल कूद मचाते हैं जैसे बच्चे, नॉटी बच्चे होते हैं। तो एक तो होते हैं बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं, एक होते हैं थोड़ा कम नोटी होते हैं, एक थोड़ा और कम नोटी होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, होते हैं Yes, ना, ऐसे sir. देखे होंगे आपने कॉलेज में। Yes, sir. जो कॉलेज लेवल पे जाते थे तो वहाँ गुंडे भी होते थे, बदमाश भी होते थे, और शरीफ बच्चे भी होते थे, थोड़े बीच में शरारती भी होते थे। तो अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी लाइक मिडल वाले सेक्टर में आ रही हैं,
और कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा 1000%, 5000% वॉलेटाइल होती हैं ओवरनाइट। तो ऐसी करेंसीज जो होती है लाइक, उसमें मैं ये कहूंगा कि वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सारी करेंसी मान लो मेरे पास है, पूरे कॉइन्स अभी पब्लिक के पास नहीं है। आउट ऑफ 199.99% आई एम होल्डिंग। सो उसका रेट मैं रातों रात ओवरनाइट कहीं का कहीं लेके जा सकता हूँ। These are called manipulations. So be careful from these kind of currencies. That's my suggestion. So that you can do only, like you can save yourself from these kind of manipulations in the market only when you you study them. yes, you study them. You are able to decide which is good for you, which is not good for you, and some currencies they are having good projects behind them. Like say, have you ever heard the name of Polygon? Matic? No sir. नहीं, इंडियन कंपनी है ये। No sir. पॉलीगन जो है, जो प्रोजेक्ट आपने बोला ना महाराष्ट्र और आंध्रा ने वो ब्लॉकचेन के किए हैं, वो ये कंपनी कर रही है उनके लिए, पॉलीगन वाले ब्लॉकचेन पे। तो पॉलीगन जो है एक बेसिकली एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लेयर 2 की ब्लॉकचेन है। फर्दर इसके ऊपर और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं, और इनकी जो नेटिव करेंसी है दैट इज मैटिक। सो मैटिक के अंदर आप कभी भी देख लो, देखना कि फ्लक्चुएशंस तो हैं मार्केट में उसके प्राइसेस में, बट दैट्स नॉट so volatile कि overnight there is a 100% jump. There can be 20% jump, 25-30% jump जो है ये एक नॉर्मल रहता है। Okay. But 5000% jump, 10,000% jump ये abnormal है। This is abnormal. Okay sir. So this is the say risk management of cryptocurrency जो है, but like when you come into the like practical field and all, so जो इसके risk managers हैं, there are so many tools to control all these things. Yes sir. So like whenever I'm into the position of giving consultancies to my clients, so it becomes my responsibility to design out some structure for to assess the risk involved into the implementation of the technology presently as well as in the future, how I can minimize the risk, all this, or what kind of tools should be used. So I have to advise them. I have to implement those solutions along with the, I have to tell them the cost and everything, what it, this is the cost structure of using on this thing. And Yes sir. we see so much fluctuation in this market. How risky is this? Same answer just few minutes back I gave. Yes. Yes sir, got it. Can we see stability in the future of crypto because there are such high fluctuations of present? Yes, in future more public participation will be there, more stability will be there. कोई भी करेंसी जब पब्लिक के हाथों में ज्यादा पहुंच जाती है तो फ्लक्चुएशंस उसमें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। Yes. Can cryptocurrency replace conventional currency in the future, or at least be treated like conventional? No. Yes sir, got it. That's I would say no. But you read my article. That's crypto is equal to money with question mark. Okay. Whether crypto we can say is a cryptocurrency or only crypto assets. Okay, So got it. Yes sir. it can never be. If it becomes cryptocurrency means a proper conventional currency, it means the government is giving recognition to this
to be used as a medium of exchange, which may go against the interest of the country economically. Yes, sir. Yes, Yes, got it. cryptocurrency is coming. Government of India is coming with one cryptocurrency, that is the Yes, CBDC, sir. central bank Yes, sir. digital currency. The digital rupee, it is being Yeah, named this as, right, is, sir? we call it as CBDC. This is the full form of CBDC, is central bank digital currency. Government is also not saying this is cryptocurrency, but this CBDC will run on blockchain. Yes. Yes, sir. So all those properties will be there in CBDC, what we have in proper other cryptocurrencies. Only the thing is, this CBDC will be centralized, will be under the control of Government of India. And Yes. when we use CBDC, there is no need of banks. You understand? Like when we say while using the CBDC, central government will not require other traditional banks. Yes, sir. There will be direct transfer of payments between government to The the government and the beneficial person. yes, sir. For example, government is giving subsidies. आपने सुना है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बोलते हुए आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कि भाई हमने किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचा दिए हैं, 1,000 रुपए पहुंचा दिए हैं. क्या है वो जो गवर्नमेंट एक बेनिफिट्स है वो जो देती है इनको, इनके अकाउंट में जाते हैं. बट वो कैसे जाते हैं? बैंक के थ्रू जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट है. बट अब आने वाले टाइम में सीबीडीसी की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सबके वॉलेट्स बने होंगे, इनके आधार कार्ड से अटैच्ड होंगे. वो सीबीडीसी जो है डिजिटल रुपीज वो उनके वॉलेट में जाएगा. उसमें बैंक की कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को. ओके सर. अब समझ में आ रहा है आपको बैंक क्यों शोर मचा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज बेकार हैं? यस सर, यस लगा सर. दो. अंडरस्टूड. बैंक का बिजनेस खत्म हो गया ना. लाइक 80 करोड़ जनता बैंक खाते ओपन हुए थे जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आया था. तो 80 करोड़ आउट ऑफ हिंदुस्तान की जनता कितनी है? 125 करोड़, राइट? 125 करोड़, यस सर. ऐसे थोड़ी ज्यादा है बट ऑफिशियल 125 करोड़ है. यस सर. उसमें से उस 2014 में गवर्नमेंट ने ओपन करने शुरू किए थे जो बैंक्स के अंदर जीरो बैलेंस पेमेंट पे 80 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करवाए थे. तो उन 80 करोड़ में से 5 करोड़ या 10 करोड़ तो लोग ऐसे होंगे ना जो एफडी भी जमा करवाते हैं, बैंक्स में पैसा भी डालते हैं. तो बैंक्स को बेनिफिट तो मिलता है ना कहीं. यस सर. तो अभी गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट उनको सीबीडीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो बैंक्स के अंदर तो आएंगे नहीं वो. लेकिन वो अब वो सीबीडीसी फॉर एग्जांपल आ गया फार्मर के पास में. अब वो उसको स्पेंड भी कर सकता है डायरेक्ट मार्केट में जाके, क्योंकि वो लीगल टेंडर है. अब वो उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइक किसी एटीएम में जाएगा, अपना कार्ड लगाएगा, पैसे निकाल लेगा. कन्वर्टेबल है वो कैश में. वो अपने बैंक खाते में कहीं पेमेंट करना चाहता है उसमें भी ट्रांसफर कर सकता है. दिस इज द रोल ऑफ सीबीडीसी. गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इट. गॉट इट सर, गॉट इट. बट इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं. लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर यूजिंग द सीबीडीसी. जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज यूजेस, हाउ लाइक दे कैन बी बेनिफिटेड. स्लोली एंड स्लोली उनका जो आवाज है वो डाउन होता चला जाएगा इसके अगेंस्ट जो बोलते हैं वो, क्योंकि उनको अपने फायदे जो हैं उसमें वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. Yes, got it. What impact is expected to be seen on card payments like Visa, Mastercard, and virtual currency takes over the payment sector? So, यहाँ पे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना. लाइक वर्चुअल करेंसी मीन्स जो लाइक व्हाट यू वांट टू आस्क इज दिस कार्ड्स बेस्ड ऑन दिस क्रिप्टो करेंसी, राइट? यस. वर्चुअल करेंसी तो डिजिटल करेंसी के तो कार्ड्स तो अभी भी हम यूज करते ही हैं. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं. हाँ, यस सर. वो तो कन्वेंशनल करेंसीज के कार्ड तो ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे हैं. Yes, आने वाले टाइम में
ये क्रिप्टो लाइक फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में आई हैव अ बैलेंस ऑफ से 100 बिटकॉइंस। तो जिस कंपनी में लाइक जो जहाँ पे मेरा वो वॉलेट है उस वहाँ से मैंने अपना एक कार्ड इशू करके दिया उसने मेरे को, वेन एवर आई वांट टू स्पेंड दोज बिटकॉइंस आई कैन यूज माय कार्ड। तो how my those crypto based cards going to affect the these conventional system based cards, but it's not Okay. going to affect much because people are not going to use crypto assets as their exchange of medium of exchange. Yes, They are sir. not Yes, going to sir. make payments. Nobody is going to, out of 100 I 1% 2% शायद कोई करे तो करे, otherwise कोई नहीं करना चाहेगा. Okay, got it, sir. So there is not much risk to the card companies because of this factor. India has a large remittance market, and with emergence of crypto, what change can we expect in this domain? Yes. अभी तो like in future 2-3 साल तो remittance market के अंदर government is not going to allow cryptos को. International sector में yes, they are doing it. जो XRP है वो रेमिटेंस सिस्टम के अंदर रिपल का अपना पूरा लेजर है जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में है, जो केस चल रहा है उनके पॉइंट पे है. तो Okay. यस, this emergence of crypto is going to affect that remittance market, and cost of transferring this remittance from one country to another country is very low in crypto segment, and it's very Yes, fast, sir. Yes, sir. and it's Yes, very fast, exactly. it's quick within seconds. Yes, sir. And another thing is we can say these are the atomic transfers. Atomic transfers means या तो होगा या तो नहीं होगा, बीच में सस्पेंस अकाउंट नहीं होता. Yes, it won't be stuck in between. Yes, sir. यस, अदरवाइज जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें पेमेंट स्टक हो जाती है कई बार. आप महीनों महीनों तो ढूंढते रहते हो Yes. कहाँ रह गई. हाँ, yes, yes, sir. Yes. ढूंढी तो जा सकती है प्रोवाइडेड कि योर बैंक इज स्पोर्टिव इन नेचर विद यू, बट इन क्रिप्टोस या तो होगी या तो नहीं होगी. नहीं होगी. Yes. Yeah. So, sir, later after 2-3 years, do we expect the government to allow crypto for remittance also and foreign transfer? They may allow provided the government maybe like they have some technology in hand. Some control. Yes, Okay. control, because for the control mechanism, if government if somebody comes, for example myself goes to government, and I go to the government and tell them I have this kind of control mechanism, you can implement this, and you can start this remittance market with the help of banks and all, and crypto you can allow, and nobody can misuse. If somebody try to misuse it with the help of this technology, you can immediately catch them. Government will say okay, this we are comfortable with it, no problem, you use it. गवर्नमेंट का मेन डर होता है कि पकड़ में आएगा या नहीं आएगा. Yes. So is there scope for any coins to reach the benchmark where Bitcoin or Ethereum is? देखो बिटकॉइन के बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए तो अभी किसी के पास इतना दमखम नहीं है कई सालों तक. एथेरियम वाले लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी करेंसीज हैं जो उसके पीछे लाइन में लगी. सोलाना उसकी बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है एथेरियम की. Sorry, sir, can you repeat which coin? बिटकॉइन के लेवल पे पहुंचने के लिए तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, मतलब एथेरियम भी नहीं है. ठीक है, और Okay. एथेरियम के लेवल पे पहुंचने के लिए यस लॉट ऑफ करेंसीज आर देयर, क्रिप्टो करेंसीज. सोलाना इज वेरी फेमस एग्जांपल फॉर दैट. सोलाना एथेरियम की कॉम्पिटिटर है, कार्डानो एथेरियम की कॉम्पिटिटर है. Okay. बट बिटकॉइन की कॉम्पिटिटर अभी कोई ऐसी बनी नहीं है. Okay, sir. बिटकॉइन अपने आप में जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है जिसपे बिटकॉइन चलता है उसका भी नाम बिटकॉइन है.
जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर, वो आज तक कोई उसको हैक नहीं कर पाया। एथेरियम हैक हो चुकी है, बट बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट नहीं है। एथेरियम टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है। तो जितना फाइनेंस सेक्टर है उसमें एथेरियम यूज होती है। Okay. लेकिन नाउ the technology of Bitcoin is being used in different other sectors also, like supply chain management, finance sector, ज़्यादातर decentralized और centralized formats में. There is a blockchain called multi-chain framework. Multi-chain framework has been designed on the core of Bitcoin. Bitcoin का जो core code है, that has been used for the creation of multi-chain framework. So that multi-chain is being used for the development of different other solutions. उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लगाए जाते हैं। तो आने वाले टाइम में एथेरियम, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, ऑल दिस मिक्सचर बना के इनका एक यूज किया जा रहा है। Okay. Okay, sir. But value of Bitcoin is going very fast. उसके like because of the reason is the concept of the Bitcoin based on proof of work. Proof of work जो है related to the Yes. mining of Bitcoin. So that is very strong in nature. So it's a non-hackable. कोई तोड़ नहीं पाया उसको. So security safety is much more into Bitcoin. Okay. And Got very it, big sir. financial institutions are involved into the Bitcoin, and they are taking Bitcoin as the part of their balance sheet. They are investing into Bitcoin, and they are showing Bitcoin as an investment tool in their balance sheets. Ethereum भी कर रहे हैं लोग धीरे धीरे, financial slowly big financial institutions are coming into, and they are holding Ethereum. They are investing their money into Ethereum, but they find Bitcoin is more safer than Ethereum and all. Got it, sir. And all these your questions, and some of the questions like you can add more of whether should I become trader or investor. So my suggestion, if you are new to the line, so you become investor instead of trader. Investor. Yes. Yes. Can I do trade in derivatives? Derivatives, I have explained this concept. It will give me financial leveraging. Yes, if you are not trained well enough, so don't go into the derivatives. Should I start investment from decentralized exchanges? No. It's better you stick to centralized exchanges like Centralized. Vajirex, CoinDCX. Doing operations on decentralized exchanges is a little bit complicated. First of all, you should be in a position to handle those things. If you don't know how to handle, then you better be on with the centralized exchanges. Or how much money should I start with to invest? The level of money, that's already I've given you the example of how much money you have to lose. So these are the basic things, and you can go through my articles. And Yes, sir. Today I will, sir. yes, and fundamentals. If you people want to learn about fundamentals of blockchain or cryptocurrencies, I have a course also into it. So I'm teaching some students also for that. So I have 2 months course for fundamentals of blockchain as well as cryptocurrencies. So I'm discussing all these general things about the technology as well as cryptocurrencies, and I have given some basic importance to one technology that is called Hyperledger Fabric.
तो हाइपरलेजर Okay. फैब्रिक जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितने भी बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये जब भी ब्लॉकचेन यूज करते हैं ज्यादातर, तो ये हाइपरलेजर फैब्रिक पे बनाई जाती है। तो उसके Okay, sir. बेसिक जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं क्लियर करता हूँ उसके अंदर। सो So, sir, where can we register for this? मेरी वेबसाइट पे जाओगे ना, cryptocncex.com पे सारी डिटेल्स हैं उसमें। Okay, तो sir. अगर आप ग्रुप बना देते हो कोई 8-10 स्टूडेंट्स का, सो Yes, sir. Yes, sir. I will circulate it in my college. Sir. हाँ, so first you go through all the details. So I think Yes. all of your questions have been answered by me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Still, if you need, so you can ask me. You have my Yes, sir. LinkedIn and you Definitely. have my WhatsApp number Yes. also. Yes. And Yes. even Yes. in your college, if you talk to your professor or someone else, so if they they want to arrange some general class, I Yes, won't sir. charge. I Some won't charge lecture. for Yes. that. Yeah, I won't charge for that. Like if Yes. they arrange like classroom training kind of thing during the day, so Yes. they can fix up some time. I can come online and we can decide some topics and the kind of question you have designed. We can uh, do more research on these questions. So Yes. if Yes, somebody sir. is interested into that, like in the basic course and all, Yes, sir. There are many people in our college. There are people who have cryptocurrency as their topic for the project. So, sir, I will talk to them, sir. yeah, right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So bye. Should I Thank you, take sir. off? Thank you so much, sir. You're welcome. So this has been very insightful and thanks for your help and time, sir. Thank No you. problem. Anytime you can. Right. Okay. Bye bye. Good night. Yes, sir. All the best. Yes, sir. Bye, sir.